Okay, so fourth part of foreign exchange. Give the heading, exchange rate determination. Part 4, exchange rate determination. Exchange rate determination. Okay, when I started the chapter, I had divided it into 5 parts. This fourth part is basically more or less half of foreign exchange, because the fifth part is hardly a discussion. Okay, so जो complete हुआ है, that was 50%, and this is the rest 50%. तो since ये लंबा portion है, तो let me explain to you अपने क्या क्या cover करने वाले हैं. This topic says that exchange rates are determined by a number of factors, like the growth rate of GDP of the economy, like interest rate in the economy, inflation, money supply, fiscal policy, balance of payment situation, and so on. However, since we are not specializing in macroeconomics, they have made us responsible to understand the relationship between exchange rate and 2 important factors. One factor is interest rate and the other factor is inflation. तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 फैक्टर्स के साथ जानना है, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट का क्या लिंक है और एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन का क्या लिंक है. तो अल्टीमेटली 3 वेरिएबल्स हो गए, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन. इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप इज टू बी स्टडीड इन दिस टॉपिक. ठीक है. तो इफ आई जस्ट फॉर विजिबिलिटी पर्पस, इफ आई शो देम दिस वे, विच मीन्स तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को एक एक वेरिएबल मान रहा हूं. दिस इज एक्सचेंज रेट, this is interest rate, and this is inflation. तो इन तीनों में रिलेशन स्टडी करने. इन रिलेशनशिप का अलग अलग नाम है. एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी, IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी. एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन. और इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में जो रिलेशन है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, IFE, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट. सो IRP, PPP, IFE. एग्जामिनेशन स्टेटस. एग्जाम में IRP इज टेस्टेड ऑलमोस्ट एवरी टाइम. ओके, तो वन सम फ्रॉम IRP इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल इन द SFM पेपर, इससे आएगा ही. Purchasing power parity has now started coming. From 2010 onwards, they've started setting sums. International Fisher effect has never been tested. अपना क्लास में मेजर टाइम इंटरेस्ट रेट पैरिटी में जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सम्स आया हुआ इससे, और इस पर जो मेहनत करते हैं अपने, उस मेहनत के कारण PPP बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज ये इससे रिलेटेड है. तो PPP में कर रहे उतना ही है, बट कमती टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द एफर्ट ओवर हियर. और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इज जस्ट अ क्लोजिंग फिगर, मतलब उस पर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कवर. मैं इसका लेआउट दे रहा हूँ, ठीक है. प्लीज राइट डाउन. एक्सचेंज रेट्स आर डिटर्मिन्ड. Exchange rates are determined. Exchange rates are determined by a large number of factors. Exchange rates are determined by a large number of factors. Exchange rates are determined by a large number of factors, comma. The most important of these are interest rate and inflation. Interest rate and inflation. Interest rate and inflation. Full stop. We will therefore cover the following relationship. We will therefore cover the following relationship. We will therefore cover the following relationship, dash. Next slide. Section 1. Section 1. देखो Section 1 dash interest rate parity. Section 1 interest rate parity.
इंटरेस्ट रेट पैरिटी ब्रैकेट आईआरपी, आईआरपी। और क्या डिस्कस किए, आईआरपी किसके किसके बीच में रिलेशन है, एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट। लिख दो डैश, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट, relationship between exchange rate and interest rate, relationship between exchange rate and interest rate, interest rate. Number B, section 2, section 2, purchasing power parity, section 2, purchasing power parity, section 2, purchasing power parity, section 2, purchasing power parity bracket PPP, purchasing power parity bracket PPP dash, relationship between dash, relationship between exchange rate, relationship between exchange rate and inflation, relationship between exchange rate and inflation, exchange rate and inflation. Section 3, international Fisher effect. Section 3, international Fisher effect, international Fisher effect bracket IFE, bracket IFE dash, relationship between interest rate and inflation, relationship between interest rate and inflation, relationship between interest rate and inflation, interest rate and inflation, full stop, para change. These three are captured, these three relationship are captured, these three relationship are captured in the graph below. These three relationships are captured in the graph below, in the graph below. ठीक है, तो ग्राफ कॉपी कर लो, जिससे रिवीजन के टाइम पे राइटअप से मतलब ही नहीं है, बेसिकली ये स्टडी कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, 3 पॉइंट लिख दिए। एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, 3 पॉइंट लिखे। एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में आईआरपी, फिर एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन के बीच में पीपीपी, और फिर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में आईएफई, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में आईएफई, आईएफई। ठीक है, तो गिव द हेडिंग। सेक्शन 1, सेक्शन 1 इंटरेस्ट रेट पैरिटी, सेक्शन 1 इंटरेस्ट रेट पैरिटी, सेक्शन 1 इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ओके।